Welcome class. Today we will discuss the inheritance of two genes. In the previous class we have discussed about the inheritance of one gene where we study the principle of segregation, that is also called law of purity of gametes. We have studied incomplete dominance, codominance and the leuotropy. Beside them we study about the testrose and the dacrose. So class, today we will start the new topic, that is inheritance of two genes, which simply means how the two characters simultaneously or together inherited, means transfer from parents to the progeny. So class, today we will start the inheritance of two genes, and the inheritance of two genes, it is described by a process. We will discuss Mendel's next law. According to that is the principle of segregation, principle of independent assortment. So class, according to the principle of independent assortment, the factor or allele of different characters, these allele get randomly rearrange themselves in the offsprings during the fertilization. So we can simply say, because we are describing the inheritance of two genes, so inheritance of the two genes, it simply means that we just take parent genotype where the two different characters we will involve here. For that sake we will discuss the dihybrid cross. So class, we discuss what is the principle. So class, in the principle of independent assortment, according to this principle, factors or alleles of different characters assured or separate independently during gamete formation and get randomly rearranged in offsprings at the time of fertilization. So class, this is the principle or the law of independent assortment. According to this law, what happened there, factors और allele of different character, जो हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनके फैक्टर्स अशोर्ट और सेपरेट. अशोर्ट मीन्स दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूट, बोलते हैं ना हिंदी में छांटना, हम सेपरेट ग्रुप बनाते हैं. तो एलील्स जो होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के, वो अशोर्ट या सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के समय पर वो अलग होते हैं. एंड गेट रैंडमली रीअरेंज, रैंडमली विदाउट एनी पैटर्न वो रीअरेंज होते हैं in the offsprings at the time of fertilization. So that is the class law of independent assortment. So class, in this law is deduced from we can say this law is deduced from dihybrid cross. So class, to discuss this law, we just need to understand the dihybrid cross. As the name suggests, di means two, hybrid means mixing. So class, in the dihybrid cross,
the organism having contrasting alleles. What we do? We make cross between organism having contrasting allele of two different characters. So what we do in the dihybrid cross? We just cross two parents, we just cross organism having contrasting alleles of two different characters. So class, in the dihybrid cross, what Mendel do actually? Mendel ने क्या किया? Mendel made a cross is made between. So class, now it is important. A cross is made between pure rounded yellow seeded plant. Class, when we talk about the genotype, so because it is rounded, so it is RR, yellow seeded, capital Y, and pure wrinkled green seeded plant. So class, genotype की बात करेंगे, it is small r and small y. So main thing we have to focus. देखिए, हम बात कर रहे हैं dihybrid cross, where we study the two characters. So class, first is the seed shape and second is the seed color. So two characters we take, and because Mendel said that for every character there are two factors, character always present in the pair, factors always written in the form of pairs. So we take two, capital R, capital Y. So class, this cross is made. In this cross, what we get? So class, before discussing this, we should know that capital Y, it means, first we discuss the R, the round shape of seed dominates over wrinkle. So क्लास, हमने पढ़ा था पहले भी कि जो राउंड शेप होती है वो डोमिनेंट होती है रिंकल पर. इट मीन राउंड इज कंट्रोल बाय द एलील R, it is dominant over R, it means wrinkle. In the same way, in the color, the yellow color for seed is dominate over the green color. So class, we can say that capital Y dominate over small y. So considering this, we just make a dihybrid cross where we just cross the seeds. हमने उन seeds को cross किया. So all the F1 plants we get, all F1 plants or hybrids, they all are the round and yellow seeded. तो जो हमारे F1 प्लांट बने, वी विल डिस्कस दैट बाय द, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी क्रॉस की मदद से. तो क्लास, अभी के लिए हम इतना पढ़ते हैं कि जो F1 प्लांट आए, अभी हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, तो F1 प्लांट्स के लिए आए हैं. F1 प्लांट जो है हमारे वो राउंड और येलो सीडेड हुए. अब देखिए ज़रा, व्हेन दीज F1 प्लांट्स आर दे आर सेल्फ ब्रीड, जब इनको सेल्फ ब्रीड किया गया तो क्लास इन द F2 जनरेशन, तो क्लास F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या हुए, वी गोट 4 टाइप ऑफ सीड्स.
तो क्लास हमें 4 तरह के सीड मिले, और वो 4 तरह के सीड कैसे थे बेट क्लास? दे वर द राउंड येलो, wrinkle yellow, round yellow, green ring yellow, they were round green, and they were wrinkle green. So class 4 type seed we get, and out of these 4 type हम देख सकते हैं कि 9, 3, 3, 1 का जो रेशो था वो यहाँ पर हमारा मेंटेन हुआ. वी विल डिस्कस दैट लेटर, हम इसके बाद में बात करेंगे कि रेशो में क्या रहा. देखिए जो हमारे राउंड येलो सीड थे और जो हमारे ग्रीन रिंकल सीड थे, दीज टू आर पेरेंटल टाइप, वो पेरेंट के अंदर थे, एंड द 2 टाइप रिंकल एंड राउंड दे आर रिकॉम्बिनेंट. सो क्लास दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट. इसके बाद क्लास हम बात करेंगे क्रॉस की हेल्प से कि किस तरह से सीड प्रिपेयर हुए और क्या इनका जेनेटिक और फिनोटाइप रेशो रहेगा. सो क्लास अब हम बात करते हैं क्रॉस के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की. तो देखिए क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इट इज कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. R स्टैंड फॉर राउंड and the Y stand for yellow. So it is round yellow seeded plant. It just grows with small r means wrinkle and Y means green. So class, we are going to make a ratio between round yellow seeded plant and wrinkle green plant. So these are considered as parents. So we are taking them as a parent from here, and from here we get gametes capital R from both R, and from both Y we take Y. In the same way it is small r, small y. So these are the gametes or the sex cells. So class आगे चलते हैं. Now we just make them cross. So these gametes make cross R, R, Y, Y. So these are our F1 hybrid first generation. F1 जनरेशन, इट इज़ F1 हाइब्रिड. एंड अगर हम फिनोटाइप की बात करें क्लास, तो ये रहेगा हमारा कैपिटल R, देखिए डोमिनेंट है. सो कलर रहेगा, सॉरी शेप रहेगा राउंड, एंड कैपिटल Y इट इज़ द येलो. सो क्लास वो हमने पढ़ा था पहले भी, जब हमने डिस्क्रिप्शन को पढ़ा था. वी डिस्कस दैट ऑल द F1 प्लांट्स आर राउंड एंड येलो. F1 हाइब्रिड डोमिनेंस को फॉलो करता है. What we have to do next? Now we will make the self breed. We will make the self cross, the selfing between the F1 hybrid. So class, from the F1 hybrid, when we make the selfing, now the gametes which are formed from here, they are okay. One more thing we will discuss कि gametes कैसे बनेंगे. अब यहाँ पर देखिए, तो gametes की जब हम बात करेंगे तो क्लास gametes कैसे बनेंगे. कैपिटल R, स्मॉल r. We take, now we take the second character Y and Y, Y and Y. So from here we get RY, RY. Now small r capital Y and small r small y. So class, we get 4 gametes here. Now we will make Punnett square. Actually Punnett square is a type of checkerboard where we just make boxes, we write the gametes there, and we will make the crossing between these gametes. One thing we have to remember, that in the horizontal line we will write the male gametes, and in the vertical line we will write the female gametes. This checkerboard method is designed by the Punnett, that is why it is called Punnett square. So just let's see it. So what we made, we just write the gametes. First we draw a table for that.
So class, in that we will write the gametes first. We just make the size balanced here. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस बॉक्स को भी. So we can easily write the gametes. Okay now. So class, 4 gametes, capital R Y, capital R small y, small r capital Y, small r small y. So these are the 4 gametes we mention here. Class, one thing we have discussed, that the horizontal line always in the Punnett square, in horizontal line we will write the male gametes. That's why the male gametes in that side, and female gamete we write in the vertical point, in the vertical direction, RY. It is just the selfing. We are making the selfing between the F1 hybrid. So class, again we are copying these gametes RY, RY and RY. So class, when we complete this cross, we complete this Punnett square. Let's complete it. R, capital Y, R, capital Y, small y, R, capital Y. From here capital R, from here small r, capital Y, from here small y. In the next, capital R, capital Y, small y, capital R, small y, capital R, small r, capital Y, small y. From here capital R, small y, and here also small y. Capital R, small r, capital Y, small y, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, from here, and capital Y. Now small r, small y, capital Y. Okay, capital R, small r, capital Y, small y, capital R, small r, small y, R, Y and Y, small r, small y. So class, we have completed that checkerboard, we have completed this table, and when we check out the phenotype. क्लास, अभी तक हमने केवल जीनोटाइप लिखे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं फिनोटाइप की तरफ. देखिए, जहाँ भी कैपिटल आर है वो राउंड रहेगा, और जहाँ भी कैपिटल वाई है वो येलो रहेगा. ये सीड का हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं. इट इज़ राउंड येलो, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो. इट इज़ राउंड, कैपिटल वाई येलो, अगेन राउंड, येलो. कैपिटल आर मीन्स राउंड, येलो, राउंड, येलो, राउंड, येलो, because capital R, capital Y. It is very easy class. Wherever you get capital R, write round, and when you get capital Y, yellow. RY. Okay, one thing you will see here, it is capital R, we write round, but here is there is no capital Y. यहाँ पर कैपिटल Y नहीं है. That's why it is not yellow, it is green. Capital R, capital Y, again round, yellow. Here round. There is no capital Y. There is no capital Y. It means there is no yellow. It is green.
So this thing we have to remember only. Okay, R round, capital Y yellow. There is no capital R. कैपिटल आर नहीं है तो राउंड तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा? रिंकल. एंड कैपिटल वाई सिंपल मीन्स इट इज येलो. अगेन स्मॉल आर, सो देर इज रिंकल. कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर राउंड. देर इज नो कैपिटल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई नहीं है इसलिए येलो तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा? इट विल रिमेन ग्रीन. Small r wrinkle because capital R is not there and it is yellow. And in the last there is neither capital R nor capital Y. तो ना तो यहाँ कैपिटल R है, मीन्स ना तो यहाँ शेप के लिए डोमिनेंट एलील है और ना ही कलर के लिए. सो दैट इज वाई बोथ रिसेसिव एलील एक्सप्रेस एंड कैपिटल R मीन्स रिंकल और कैपिटल Y मीन्स स्मॉल y मीन्स ग्रीन. So class, if we see that close, if we see this table, we will get 4 kind of seeds there. तो यहाँ पर हमें 4 तरह के सीड मिल रहे हैं क्लास. 4 type of seeds we are getting here. मैं बोल्ड करता हूँ, देखिए. राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन. So class, these are the 4 type of seeds we get here by the phenotype ratio. तो देखिए अगर फिनोटाइप की बात करें, एक्सप्रेशन की बात करें, तो फिनोटाइप यहाँ पर केवल 4 हैं. मेंशन करते हैं, देखिए हम बात करते हैं क्लास फिनोटाइप रेशो. राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन and wrinkle green. Class, one thing we have to consider here, हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है कि देखिए राउंड येलो हमारा पेरेंटल टाइप था, रिंकल ग्रीन भी हमारा पेरेंटल टाइप था, बट दीज टू इन द मिडिल, दीज टू आर द रिकॉम्बिनेंट. दीज आर द न्यू कैरेक्टर्स ऑफ द सीड, दीज आर द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द सीड विच अराइज इन द F2 जनरेशन. सो दिस इज द F2 जनरेशन. अगर मैंने काउंट करें क्लास, तो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो राउंड येलो 9, रिंकल येलो 3, राउंड ग्रीन 3 एंड रिंकल ग्रीन इज 1. सो इन द फिनोटाइप वी गेट ए रेशो 9 3 3 1. सो क्लास डायहाइब्रिड रेशो जो रहेगा हमारा स्टैंडर्ड, इट इज अकॉर्डिंग टू मेंडल 9 3 3 1. इट विल बी द रेशो. And here the 9 and 1, it is parental genotype and these two are the recombinant. So class, this is the dihybrid cross, or we can say the principle of independent assortment. One thing class you will consider for the competitive exam, एक पॉइंट है यहाँ पर. देखिए जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा था क्लास जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो को. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल फिनोटाइप रेशो हमने लिखा है, तो जीनोटाइप आप देख सकते हैं इट इज 16 टाइप ऑफ सीड्स आर हेयर, 16 सीड्स आर हेयर. अब इन 16 ऑफ स्प्रिंग में अगर हम जीनोटाइप को कंसीडर करें, इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. लेकिन आप याद रखेंगे रेशो को इसके, तो यहाँ पर जो रेशो रहेगा क्लास, सो क्लास यहाँ पर जो जीनोटाइप रेशो रहेगा हमारा, तो जीनोटाइप रेशो जो रहेगा क्लास, यू विल रिमेंबर दैट व्हाट विल बी द जीनोटाइप रेशो. इट इज़ 1:2:4 1:2:1. So this is the genotype ratio. Quite difficult to learn, but it is but we have to learn this for the competitive purpose. One thing you will remember: monohybrid cross, where one character is involved. Genotype ratio 1:1, phenotype ratio 3:1. Dihybrid cross, 2 character are involved. Phenotype ratio 9:3:1, and the genotype ratio it is 1:2:4, 2:1:1:1. Again
The first and last are parental type, and in the middle these all are the recombinant type. These are the new combinations. So class, this is all about the principle of independent assortment. In the next section we will start the next topic. It is the chromosome theory of inheritance. Why the Mendel work not consider, give full credit on that time, क्या कमियाँ रह गई थी, and then we will start the chromosome theory of inheritance proposed by the Sutton and Boveri. Thank you class.